We are going live. Let us see if we are live or not. Yes, we are live now. Hi guys, hello everyone. Welcome to the session. So this is basically an information session for Unacademy CAT Foundation test and the marathon session that we will be taking to build a very strong foundation for all the students who are going to appear for CAT 2023. I have with me Tarun sir, Nishant sir, Deepika Avasti ma'am, and Ravi sir, and Abhilasha ma'am, and many other educators too. So what we are going to do is, in the session today, we will be giving you the details how you should be starting with your CAT exam preparation and the marathon sessions that Unacademy is going to take on 9th and 10th of December, followed by the test. How this will help you in your CAT exam preparation. Why these sessions are important, you guys can also ask queries. We have experts in quant, data interpretation, as well as of verbal ability. So and also the experts in reading comprehensions. So any doubts that you have regarding your exam preparation, the syllabus, or any type of questions that you want to ask, we are here to clear all your doubts. So starting with, let me just explain you why this foundation course is helpful for all the students going to appear for 2023. See guys, many times students are not even aware of the syllabus. Throughout the year, they keep on studying books. They never get to know where they should be studying from. क्या क्या कंटेंट उनको पढ़ना चाहिए, what are the topics in quant they should be starting first, DI में कहाँ से start preparation करना चाहिए, VRC में VRC को अच्छा करने के लिए कौन सी books पढ़नी चाहिए, वो क्या कैसे improve करना है, right? How you should be starting your preparation, right? So these foundation courses will be giving you the details of each and every topic. And also, I'm a quant expert and you're an expert. So I'll be telling you quant exam के अंदर when you start your preparation for quantitative aptitude, there are topics, right? There are basic topics which you are supposed to know before you start any topic. Before you start with topics like arithmetic. For example, if you're studying time, speed, and distance, there is no point of studying time, speed, and distance before you know the basics of ratios. So it's important you first study the ratios and then you study the TSD. So this is where the foundation, this Unacademy CAT foundation will help you to learn the basics of individual topics. इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप एडिशनली, राइट, जितने भी टॉपिक्स आप आगे आगे पढ़ोगे, तो यू विल बी हैविंग अ बेसिक नॉलेज ऑफ द टॉपिक्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड a particular quant topic in detail, right? So I would like to ask Nishant sir to give you the complete schedule, how we are going to cover all the topics, the basic foundation topics of quant, DLR, and VRC in these 12 hours of marathon. The schedule will be given to you by Nishant sir, and further, you guys can also ask any doubts for your CAT exam preparation that you want to ask. Nishant sir. So, thank you, Samari sir. Hi, good morning, everyone. So, guys, we are starting the first workshop tomorrow, that is 9th, and it will be a 6-hour marathon that will start at 3 p.m. So, Ravi Prakash will start with percentages, that is the foundation of the quant. So then I'll be taking a session with you from 4 to 5 p.m. That is LR linear arrangement की हम लोग बात करेंगे इसमें. From 5 to 6, समीर सरनारायण सर आपके साथ DI लेंगे, calculation based DI, and then 6 to 7 p.m. Deepika Avasti ma'am will take parajamples. Then 7 to 8, Abhilasha ma'am will take RC, reading comprehension, first part, and 8 to 9, Udit Saini sir will take quant strategy, preparation strategy. So ये हमारा 9th का schedule रहेगा. On 10th of December, we have a schedule from 3 to 9 p.m. जिसमें Ravi Kumar sir will start linear arrangement, circular arrangement at 3 o'clock. Then Bharat Gupta sir will take quant, ratio and proportion, 4 to 5. At 5 p.m, Tarun Malik sir will take DI. Hi Tarun sir. He'll take calculation based DI. Then 6 to 7, Suman ma'am will take para summary. 7 to 8, Shabana ma'am, reading comprehension part 2. And 8 to 9, Ravi Prakash sir will take strategy session, LRDI preparation strategy for 23. And on 11th, we have a test from 12 to 1, followed by an analysis. So that is the schedule for the next 3 days. So if you are not enrolled for this, if you have not, subscribe to this, so do that fast.
So now Abhilasha ma'am will tell you what we'll be doing in VARC and verbal section. Yeah, Abhilasha ma'am, please. Thank you, Nishant sir. Hello everyone. Good morning, learners. Welcome to this session. So अभी हम लोग इतनी exciting बातें कर रहे हैं. UCFT बहुत exciting होगा. हमारा जो workshop होने वाला है for 2 days, that's going to be something that is an eye opener. There will be so many students out there who haven't yet understood what the CAT game is all about. So this workshop, this series of sessions that we are going to be doing will be very, very helpful in this area. That you can understand where this exam is coming from and you can understand some of the important topics that are going to be covered. Now in VARC, you all know that the VARC section has 24 questions. We have 4 reading comprehensions. As of this year, there were 4 reading comprehensions with 4 questions each in all the 3 slots. And we had a big surprise in the VA section. Now, VA section, there are 8 questions, and the surprise was that instead of having odd ones out, we had a new type of question, which was para completion. So, अभी क्या होगा कि जो VA है उसमें para summary, para jumbles and para completion, and reading comprehension में जो हमारा standard reading comprehension चल रहा था, which was 4 RCs with 4 questions each, will follow. So hopefully next year भी यही रहने वाला है. तो इसी के बारे में मैं और दीपिका मैम, शबाना मैम और सुमन मैम cover करेंगे. We will be taking these sessions where Deepika ma'am will be covering para jumbles, Shabana ma'am will be taking up some amount of reading comprehension, I'll take up some reading comprehension, and Suman ma'am will also be taking some para jumbles. तो ये जो sessions है इसमें हम लोग देंगे तुम्हें inputs about how to handle reading comprehension, about what are the basics of reading comprehension, how anyone who's starting out now can build your reading comprehension skills, because see, it is very important. Not a lot of us are into reading. तो होता ये है कि जब बच्चे आते हैं यहाँ पर, सर आप लोग भी जानते होंगे, काफी लोग को ये प्रॉब्लम रही भी होगी. आप सारे तो जेंटलमैन आर ऑल मैथ्स टीचर्स, तो आपने सबने देखा होगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि लोगों ने रीडिंग नहीं की होती है. और रीडिंग नहीं करने से क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होती है. यू आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग and therefore you find reading comprehension to be very difficult. So how to start reading? What is it that you should do to build a reading habit? What are the intricacies of reading comprehension? तो हम लोग इस पे बात करेंगे. 2 सेशंस रहेंगे, एक मैं लूंगी, एक शबाना मैम लेंगी, and we will cover all the basics, all the small nitty-gritties of reading comprehension. तो अगर आपको लगता है कि आप CAT पे चल चुके हैं, CAT जर्नी पे आ गए हैं, and you feel that you are somewhere having a little bit of problem in your reading comprehension section, you just have to join us and come and attend these sessions. I'm sure we will be able to handhold you to your CAT preparation. Baki to Deepika will be there. Deepika and Suman and Deepika, I'm sure, will tell you a lot more about VA. I think you have covered a lot, ma'am. And Shabana ma'am is actually in the comment box. So yes, hi to ma'am and hi to everyone. Hi Shabana ma'am. So Abhilasha has covered almost everything about VRC section. So yes, we are going to introduce you the importance of reading, because that is the basic building foundation for the entire VR section, whether it is VA section or I would say RC section. That is quite true. But apart from that, still we don't have that much time to attempt all the question exam, at least for majority of the students. And VA, if we compare to other sections, generally have more questions, which kind of prove that they are definitely in VA section, that VR section, they're definitely testing your time, I would say time management, that how many questions you can attempt, or do you know your strengths and weakness. So in this particular marathon, which is happening on 9th and 10th, where Abhilasha is going to teach you reading comprehension, and I am going to take you VA some part, parajumble and all. 2 things we need to remember, understand, students, that whatever we are going to teach you is not just how to go about or approach things, because that is something you can get with us and like in many other sessions. But even if you're getting correct answers, how you can do the same thing in lesser time. You know, how can be very sure about your answers? A lot of time you get correct answers, but you're not very sure, especially in verbal section, whether you're correct or not. So these are the few things we are going to focus on. Secondly, whatever we are going to teach you, please make sure you actually understand detailed, like, answers of everything, because just getting answer is not correct. And we are conducting a test for you, like, on 11th. All the questions in that test are going to be from these marathons, which we are going to teach you in, be it verbal section or quantitative. And you have the,
I would say you have this opportunity to win exciting scholarship and rewards, which I think sir will tell you later. But this is just a preview that this marathon is going to give you a lot in terms of learning where do you stand to take good decision, like when should you start your CAT preparation, right? आपको कितना time लगेगा, आप कहाँ पे अभी stand करते हो, and उसके अलावा scholarship और rewards तो देखो है ही, right? So that. So for everything else, I think for next session, I think reasoning पे हम जाएंगे. So sir will take up from here. Good morning, learners. So I'm Parikshit. I teach QA and reasoning and DI, right, on Unacademy. So I think if you are looking at this session, right, I think you belong to one of my two categories. Category one, you have decided that you will write the CAT, and probably you are looking at the session because you want to understand how sessions are conducted on Unacademy, and you are also trying to figure out which institute you want to join, right? That's reason number one. And reason number two could be you still don't know whether you want to write the CAT because you're not aware of the syllabus, right? And you want to learn and probably understand what are the type of questions being asked in the CAT, or what are the things that are being taught, or what is the journey like over the year, right? Both these missions or both these objectives will be achieved in these marathon sessions. I'll talk about specifically about the reasoning section, right, which is section 2 of your CAT. Now, if I tell you about VRC, okay, I tell you about reading comprehension, something rings in your mind, okay, a passage, and I'm going to answer something. Quants, I tell you percentage, back of your mind, you have something, okay, what is percentage ratio proportion? But you know what? Reasoning, the section 2 of your CAT, right, is one section which probably not many of you have got exposure to. You might be very good in quants. You might have done your schooling in probably a convent education and you think that you are good in VRC, you are good in quants. But reasoning, everyone starts at the same level. And the type of reasoning questions being asked in the CAT in the last few years, right, have changed a lot. And that's another reason why you should understand what are the type of questions being asked in the CAT in the last few years. Trust me, and I think you can go and ask anyone, there are not too many good reasoning books available in the market. And hence, if you go through the sessions that we are going to conduct over the next couple of days, right, you will understand what's the latest pattern in the CAT reasoning section, right? Very important, highly scoring, and as I've been saying in the last 1 minute, right, everyone starts at the same level. So if you are ready to put in that hard work, we are going to teach you everything. A lot of shortcuts, a lot of tricks, exposure to a variety of caselets, and trust me, 98 percentile which you are dreaming, right? 98, 99 percentile which you are dreaming, you attend the sessions and figure out the quality of the sessions. And if you like the sessions, you take the test on the Sunday, get scholarships, enroll with us, and trust me, the journey is going to be beautiful. So yes, learning will be fun. Looking forward to it. तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवि कुमार। मैं तुम्हें क्वांट और एलआरडी दोनों अनअकैडमी में टीच कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ये फाउंडेशन सीरीज के बारे में पर्सनली ये लगता है कि जैसे तुम लोग स्टार्ट करते हो अपनी जर्नी, जनरली लोगों को नहीं पता होता कि कैट की प्रिपरेशन में कहाँ से स्टार्ट करना है, क्वांट कहाँ से पढ़ना है, एलआरडी कहाँ से पढ़ना होता है। तो रैंडमली क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, रैंडमली कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, फिर फ्लो में चले जाते हैं। वो फ्लो में पढ़ते उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही। जैसा इस बार 2020 के बच्चों के साथ हुआ, तो क्वांट का पेपर देखा, समझ में नहीं आ रहा, एलआरडी देखा, मुझे सेट नहीं बन रहे, बीआरसी में वो सबसे पहले स्लोट 1 में कह रहे हैं कि पता नहीं क्या आ गया। सडनली होता यही है कि तुम अपने आप को बिल्ड ही नहीं कर पा रहे। अपना जो बेस है वो रेडी करना बहुत जरूरी है। अगर तुम लोग किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेस तुम्हारा रेडी होना चाहिए। उसके बाद अगर हो सकता है कोई क्वेश्चन टफ भी आ रहा है तो तुम थोड़ा टाइम ले सकते हो, बट एक्यूरेसी पे तुम्हारा इफेक्ट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट इसी फाउंडेशन कोर्स के थ्रू हमने जो ये फ्री सीरीज रखी है, इसमें 6 एजुकेटर्स 1 डे, 6 एजुकेटर नेक्स्ट डे। तो तुम्हारा क्वांट, एलआरडी और वीआरसी, हाउ टू स्टार्ट, इनको स्टार्ट कैसे करना है, फिर उस पर टाइम कैसे मैनेज करना है, फिर उसके बाद अगर तुम्हें थोड़ा समझ में आ गया कि हाँ डेफिनेटली तुम कैट क्रैक कर सकते हो, फिर हार्ड वर्क करने का मतलब है। जनरली क्या बच्चे क्या करते हैं, मान लो कि साइड वाले ने कैट का एग्जाम की प्रिपरेशन की है, मैं भी एग्जाम की प्रिपरेशन करूंगा, पर तुम्हें अपना मेंटली ये नहीं पता होता कि तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस लेवल पे तुम्हें जाना है। एक्चुअल में डेस्टिनेशन का पता होना चाहिए। रास्ते बन जाते हैं, रास्तों का कोई सीन नहीं है कि भाई मैंने यहाँ से पढ़ा, मैंने ये किया वो किया। फाउंडेशन क्लासेस का मेन मोटिव ये रखा गया है कि तुम्हें पता होना चाहिए जाना कहाँ तक है। सो जनरली जितने बच्चे इसमें एनरोल कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट सारे एजुकेटर्स ने जो बोला है वो फॉलो करेंगे।
उस फॉलो करने के बाद एक 11 को टेस्ट है, उस टेस्ट को सिर्फ इसलिए कंडक्ट नहीं करवाया गया कि तुम्हें प्राइज मनी मिलेगी, 75 स्कॉलरशिप मिलेगी। दैट्स नॉट पॉइंट ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी का पॉइंट ये है कि तुम लोग वहां जाओ और अपने आप को चेकआउट करो कि तुम कितना पानी में हो। अब पता चल रहा है तुम पानी में हो ही नहीं, तुम तो बाहर हो, तुम्हें तो तैरने से डर लगता है, फिर तुम लोग कैट 23 के लिए नहीं बने हो। पहले अपने आप को उस टेस्ट में एनरोल करो, सोचो कि हमने 2 दिन की मैराथन से क्या सीखा है। उसके बाद एनरोलमेंट के बाद अनअकैडमी के थ्रू, अनअकैडमी का एक नया कोर्स आ रहा है 15 दिसंबर से, उसमें एनरोल करो। एनरोलमेंट के बाद अपने आप को एक काम, एक प्रॉपर सिलेबस को पॉइंट आउट करो। जनरली क्या होता है, सब कुछ तुम लोगों को सिलेबस मिलना चाहिए, पेपर पे मिलना चाहिए, फिर ये क्लासेस मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। तुम्हें अगर अच्छे से अपने आप को बिल्ड करना है, 99.5 या उससे अबो चाहिए, IIM चाहिए, तो तुम्हें खुद का एक सिलेबस क्रिएट करके लिखना पड़ेगा, उसमें टिक करना पड़ेगा कि भैया इसका बेसिक मेरा हो गया, इसका मेरा एडवांस हो गया, मॉडरेट हो गया, PYQ हो गया। ये पूरी सीक्वेंस जब जो फॉलो करता है ना, वही एग्जाम निकालता है। तो अगर तुम लोग ये सारी चीज फॉलो करोगे तो अनअकैडमी के सारे एजुकेटर तुम्हारे साथ हैं, वो जर्नी में लास्ट तक, इवन अगर तुम कैट में अच्छा स्कोर लेके आते हो उसके बाद भी हमारे प्रोग्राम चलते रहेंगे कंटिन्यू वे में। अगर तुम लोगों का पर्सनल इंटरव्यू हुआ, GD हुआ, सब कुछ के लिए अनअकैडमी ऑलवेज रेडी रहेगा। तो अगर फर्दर डिटेल के लिए अमन सर तुम लोगों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। हेलो एवरीवन, आई होप आप जानते होंगे मुझे। हेलो अभिलाषा मैम, हाय निशांत सर, हेलो सर। गाइस ये बेसिकली जो मैराथन होने वाला है, ये बेसिकली सर रवि सर बिल्कुल सही बोल रहे थे कि पहले तो आप सारे बच्चे जो भी यहाँ पे लाइव हम लोग को देख रहे हैं, जैसा समीर सर ने कहा कि यू गाइस नीड टू बिल्ड, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे मैं स्लॉट 1 दे करके आ रहा था, जब ये पेपर दिया तो मेरे को भी ये समझ में आया कि कहाँ लैगिंग पॉइंट है, क्या है। बीइंग अ स्टूडेंट मैं ऐसे ही पेपर देने गया था, बिकॉज मैं पेपर भर चुका था। तो मुझे समझ में आया कि जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर बच्चा उसको बहुत कायदे से करता है ना, तो बहुत ज्यादा है वो बहुत ज्यादा है। अगर लेकिन हाँ, वो उसका पॉइंट होना चाहिए। जैसे मैंने कई बार अभिलाषा मैम की क्लास भी अटेंड करी है, निशांत सर की भी क्लास अटेंड करी है मैं ये चेकआउट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार हम लोग बहुत पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा। मैं लाइव कह रहा हूँ सर, कोई नहीं पढ़ाता है। कई सारे कोचिंग में तो सर सिटिंग अरेंजमेंट पे पूरा 1 साल निकाल देते हैं, 1 साल, और बच्चों को पता ही नहीं होता, वो सर 1 साल सिटिंग लगा रहे हैं। और मुझे भी आइडिया नहीं होता कि वो रेलेवेंट है कि नहीं है जो पढ़ा है इस केस में फिर। हाँ सर, मैं खुद भी बच्चों को मतलब LRDI सेट्स करवा रहा था। हमको लगता है जो सेट हम लोग करा रहे हैं सर, वो कोई कराता ही नहीं है मतलब नहीं कोई कराता है। मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं बेसिकली रांची से आता हूँ, मैंने CL का देखा है यहाँ पे। मैं तो लाइव बोल रहा हूँ, मैं पहले पढ़ाता था, बट वहां क्या कर रहे हैं, वेन डायग्राम बेसिक करवाई जा रहे हैं, 2 सेट 3 सेट कराई जा रहे हैं। अगर मतलब बच्चे 50,000 किताब जो भी पैसा वो पे कर रहे हैं, उसके बाद बच्चे रियलाइज करते हैं हमारी ही गलती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको मेंटरशिप या जितने भी टीचर्स हम लोग हैं, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हर किसी को पढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग का कंटेंट ही अगर बच्चा सही से कायदे से फॉलो करता है ना सर, गारंटी है, मैं पेपर पर लिख के देने को तैयार हूं कि उसका 99.9 परसेंटाइल तो आएगा, लेकिन उसे ये रिग्रेट फील नहीं होगा कि मैंने किया क्या। अभी बच्चों को ये 2 डिफरेंस ही नहीं पता है कि उनकी गलती है कि जहां वो पढ़ रहे थे उनकी गलती है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है। मतलब तरुण सर आई वुड से दैट आप एग्री करेंगे कि ये बहुत बेसिक हो। बच्चा लास्ट में पता है क्या कह रहा होता है, अरे यार मैंने ही अच्छे से तैयारी नहीं करी है। वो बच्चा लास्ट में कह रहा होता है, मेरा ये पॉइंट है ही नहीं। मेरा ये पॉइंट है कि भाई अगर तुम्हें टीचर्स शुरू से लेकर अंत तक पढ़ा रहा है, तो टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अरे तुम्हें वो सही कंटेंट दे। यहाँ सब कुछ कंटेंट का ही माजरा है। तो दैट्स व्हाट मेरा ये कहना था। बाकी तरुण सर आपको बताएंगे। I guess many times students are not even aware of the syllabus thing, right? जैसे आप कहते हैं कि they keep on studying sitting arrangement and Venn diagram. That's true. They are I met many students. They are not aware of the topics like quantitative reasoning and logical. Yes. Games and tournament, right? From last many years, games and tournament has always been the part of LRC. Look, I guess हर साल games and tournaments एक set आ रहा है, and these are the people who they take hardly 1 or 2 sessions on games and tournament. Yes, this exists. I agree to the point.
And that's the responsibility of the students, that they should first understand what is their syllabus and they should demand this to their educator also. Yes. This is where the foundation, these foundation things that we are coming up with, this will help them understand the paper. This will not just help them understand the basics of individual topic, but this will also help them to understand what is the paper, what are the different topics that they're supposed to prepare for throughout the year. So foundation test as well as the foundation marathon that Unacademy is conducting will help every student to understand the syllabus in depth. Right, they will actually understand what are the important topics of LR. It's not just about sitting arrangement. It's not about coding and decoding. There are separate topics that CAT test you on. CAT का logical reasoning 90% I personally believe कि number skills पे based रहता है. Where students are supposed to think in terms of numbers. Right, though it's basic addition or subtraction, but you should learn how to make cases, how to think in terms of quantitative reasoning. I guess LR का तो last 7 years से मैंने अपना एक trend analysis भी डाला था, the type of questions they are asking in the last 5 years. Every logical reasoning set that they ask has some part of quantitative reasoning in it. And students are not even aware of कि quantitative reasoning exists करता भी है या नहीं करता है. And also knowing the syllabus is something which is very very important for students also. And I have personally realized that कि सर common sense भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ते जा रहे हो. I realized कि personally common sense बहुत ज्यादा important role play करता है कि hit of point में आपका common sense काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. So that's how I believe. Over to you. बिल्कुल. ये ना एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम ये भी लगी है कि इसके लिए हमको पर्सनली बच्चों से बात करनी चाहिए. जैसे क्या होता है कि मैंने लर्नर्स को देखा है, उनको क्वांट अच्छा लग रहा है ना, वो क्वांट की सारी क्लासेस ले रहे हैं, सारे एलिमेंटर से पढ़ रहे हैं, डेप्थ में जा रहे हैं. अगर उन्हें एलआरडीए में वेन डायग्राम अच्छा लग रहा है ना, तो वेन डायग्राम में पढ़े जा रहे हैं. कॉम्पिटिटिव और एंट्रेंस एग्जाम निकलते नहीं है. जनरली आपको मतलब जितना पढ़ना है उसके बाद शिफ्ट करना ही पड़ेगा. आपको वीआरसी में टाइम देना पड़ेगा. अब की बार ऐसा नहीं कि टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, बट बच्चे वीआरसी की तरफ गए नहीं है. 50% तो वीआरसी की तरफ गए ही नहीं है. उनको क्यों 5 मिनट मजे आ रहे हैं, रवि सर की क्लास चल रही है, समीर सर की क्लास चल रही है, अरुण सर की क्लास चल रही है, चलो वहां चलते हैं. उन्होंने कौन मजे आ रहे हैं क्योंकि वो आंसर्स कर पा रहे हैं. ठीक है, तो मुझे लगता है कि पर्सनली अपने को सबको गाइड करना पड़ेगा उन लोगों को कि भाई एक चीज में मजे नहीं है कि ये सिर्फ तुम हो सकता है तुम 1 ईयर तुम्हें अच्छा लगेगा बट रिजल्ट्स नहीं बनेंगे. और इस बार मैंने नोटिस किया तो 10 लर्नर्स जो थे ना क्लास के मेरे, उनके 50 परसेंटाइल भी नहीं आएंगे. और जो सिर्फ आते थे क्लास में पढ़ते थे वो 95 99 अब वो लेके जा रहे हैं आराम से, क्योंकि इंटरेस्ट से नहीं निकलता एग्जाम. आपको क्वांट में इंटरेस्ट है, एलआरडीए में, बीआरसी में. और ये आई थिंक एज ए टीचर हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा उन लोगों को कि हाँ भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम सिर्फ हमसे पढ़ते जा रहे हो, क्वांटी पढ़ते जा रहे हो, एलआरडीए पढ़ते जा रहे हो. वॉच मिनट डजंट मैटर करता है कि क्या वो जर्नली इस चीज में गाइड कर पा रहा है कि तीनों सब्जेक्ट का वेटेज एक जैसा है, उनको निकालना तीनों सब्जेक्ट है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होगा. और आई थिंक ये हर टीचर्स को पर्सनली क्लास में बोलना पड़ेगा, तब जाके वो बच्चे समझेंगे इस बात को. थैंक यू रवि सर. किसी ने तो किसी क्वांट और एलआरडीआई के टीचर ने ये कहा कि वीआरसी की वैल्यू है, क्योंकि सारे क्वांट और एलआरडीआई के टीचर यही कहते हैं हमसे पढ़ लो वीआरसी तो हो जाएगा. ऐसे है नहीं. बिल्कुल अलग है कि अगर आपका वर्बल अच्छा नहीं है, अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं है, तो आप वैसे भी एलआर में भी कुछ नहीं पढ़ेंगे. दैट इज आल्सो कॉम्प्रिहेंशन एंड कैलकुलेशन, तो उसमें भी आपको करना ही पड़ेगा. तो जिसको वर्बल में प्रॉब्लम होगी उसको तो हर जगह प्रॉब्लम आने वाली है. यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्वांट क्वेश्चन, यू विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द एलआर सेट और डीआई सेट, तो उसका कोई सेंस बनता ही नहीं है. एंड आप एक सेक्शन में अगर 100 भी ले आते हैं और बाकी 2 सेक्शन में आप नहीं लाते हैं, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसका भी कोई पॉइंट नहीं है. सो यू नीड टू परफॉर्म इक्वली गुड और बैलेंस स्कोर कार्ड होगा तो ही आपको कॉल आने वाला है. एंड वीएआरसी तो पहला सेक्शन है. अगर जैसे होता है ना, अगर पहला अच्छा होगा तो बाकी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर पहला खराब हुआ तो डेफिनेट है कि बाकी खराब ही जाने वाला है, क्योंकि वीएआरसी खराब होता है तो जनता गिव अप मोड में चली जाती है, जैसे एलआरडीए हम लोग देखते भी हैं. On behalf of all the VRC educators, thank you so much for giving us due importance, क्योंकि हमारे बिना आपका काम सच में नहीं चलेगा. Balance score, yes. And that is why we are conducting these sessions. जो वर्ड आपने यूज किया ना, बैलेंस स्कोर, यही चीज है जो आपके कैट के स्कोर को बनाती है और आपके
कॉल्स को निकालती है. सो इवन इफ यू आर समवन हु इज वेरी, आई आल्सो टेल दिस टू माय स्टूडेंट्स कि अगर आप वीआरसी ही करते रहोगे और क्वांट छोड़ दोगे तो नहीं हो सकता है. तो हर सेक्शन को इक्वल इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है. And this has to happen from our end also, and this has to happen from the learner's end also. That the learner also has to understand that all three sections need to be given equal importance. Because if you don't do one of the sections well, then you are not going to crack this exam. ये quant का exam या VRC का या LRDI का exam नहीं है. ये purely एक टेस्ट ऑफ योर स्किल्स है जिसे आपको हर सेक्शन में अपनी स्किल दिखानी है. तो ये नहीं है कि हमारे लिए या आपके लिए या तरुण सर पढ़ाएंगे या निशांत सर पढ़ाएंगे या परीक्षित सर पढ़ाएंगे या दीपिका मैम पढ़ाएंगे. नहीं, आप हर सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, अपनी एबिलिटीज को समझो और उस हिसाब से असेस करके अपना प्रिपरेशन करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लर्नर्स. प्लीज अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ, अंडरस्टैंड द एग्जाम एंड देन टेक इट फॉरवर्ड accordingly so that you are able to get good score in all the three sections. तभी ये एग्जाम क्रैक होगा, वरना हो नहीं सकता है. So what a beautiful opportunity we've brought for all our students by doing this marathon. सब लोगों को इतना अच्छा sections, हर section के बारे में इतने sessions होंगे, इतना अच्छा test होने वाला है कि I don't know इससे अच्छा क्या ही advantageous opportunity होगी for anyone. One more. I will go on and on forever, so please. Correct. I think we are using the words preparatory in our banners, right? And you also see every educator stressing on the word foundation. That shows that Unacademy, right, is putting a lot of stress on the foundation classes because we believe that the building blocks are essential whenever you want to build a huge building, right? All the applications that you will do is the basis of that is your foundations. So no matter where you stand, whatever is your view about quants, whatever is your view about VRC or for that matter reasoning, right? No matter where you stand, come join these classes because it's for beginners. It's for beginners and we are going to teach from ground zero. You are going to unlearn most of the things that you have learned probably in your previous school days because we are going to show you a lot of common sense which we stressed upon and a lot of shortcuts and tricks to get your answers within seconds. That's going to be the beauty of all these classes. Stress on the foundations along with shortcuts and tricks. And those shortcuts and tricks will be applicable, right? Only when your foundations are clear. So yeah, we are going to stress a lot on your foundations. Correct, sir. That is it all about, definitely. And it's all about correct mentorship also. I mean, the things we are discussing in a while. So, I mean, when we are discussing that what needs to be teach, right, that is strictly important because I mean see in quant if you see there was once a question came for reminders, right, the very easy one, right, 2003-4 and अगर आप रिमाइंडर्स पे क्वेश्चन देखोगे तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कभी नहीं आया है. बट many teachers teach good quality questions there also. Now obviously we need to teach that because sometimes it might come also, right? For example in 13 very tough questions came, right, जो शायद उसके पहले नहीं लगा था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है क्या, right? There was a one log question 6⁻⁻60 में zeros के बाद फर्स्ट डिजिट कौन सी आएगी, that was the question. So मतलब उसके पहले शायद कोई कराता भी नहीं था उसको, उसके बाद भी नहीं कराना चाहिए, वो अलग बात है. Right, the point is कि we need to tell them that see these are the questions which came, right, and these are the advanced version of that, but the chances are very less, right? It might come, but yeah, you need to understand कि किस पे कितना फोकस देना है टॉपिक पे. ऐसा नहीं कि आप एक टॉपिक पढ़ के जो आपको अच्छा लगता है you just keep doing that again. So there is no point of doing that. So correct mentorship की ही एक डिमांड जो है ना वो काफ़ी रहती है क्योंकि पढ़ना तो सब कुछ है डेफिनेटली, राइट, बट कौन सी चीज़ कितने ज़्यादा काम की है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, राइट. सो चलिए तो मैं समराइज कर देता हूँ. सो वी हैव 2 day marathon 3 p.m. to 9 p.m. 6 hours each, right, and then on 11th we have a test for that. 1 hour का टेस्ट होगा, 30 questions, 10 from each section, और उसके बाद we have analysis of that for from 2 to 5 p.m. उसमें पूरा एनालाइज करेंगे कैसे कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहिए था, व्हाट शुड बी योर ऑर्डर, व्हाट आर द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी स्क्रिप्ट, राइट.
so that is there, and obviously rewards and scholarship की बात तो हमने करी थी. So top 3 scorers will get rewards, and you can also get up to 75% of scholarship in the plus courses, right? So do register for that everyone. जो भी लोग watch कर रहे हैं, जो देखेंगे in the meantime, register करो and do this marathon and followed by the test. All the best. Thank you everyone. Thank you. Bye. All the best. All the best, guys. All the best. All the